ये वक्ता क्रिएट करेंगे। और फिर नेचर बेस्ड सॉल्यूशन क्या है, मैं थोड़ा सा इशारा करना चाहूँगा। ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जो सोसाइटल है, वो क्या कह रहा है, हमारे फार्मर को इधर उधर करते हैं, ये बबल भूसे में डालते हैं, इंक्लूड सा करना। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं, पहली बात तो ये है कि 5 मिनट मिलेंगे, 5 मिनट में तो हमारे से शुरू ही नहीं होता। हम 11 के हम 7 से ज्यादा स्टल करने वाले लोग 5 मिनट में कैसे कंक्लूड करेंगे, ये हमारे लिए। इसलिए मैं 2-3 बातें इसी में करूंगा, क्योंकि मेरे को कुछ ज्यादा बोलने का शौक नहीं है, मैं अपनी तरफ बात रखूंगा। वो ये है कि नेचर बेस्ड सोल्यूशन। पहली बात तो ये है कि क्या एग्रीकल्चर सारी नेचर ही कर रही है, इसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं है क्या? नेचर ह्यूमन बेस्ड सोल्यूशन क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ह्यूमन ही तो एग्रीकल्चर नेचर के साथ मिलकर एग्रीकल्चर में जो काम कर रहा है वो तो ह्यूमन ही कर रहा है ना, नेचर अपने आप थोड़ी एग्रीकल्चर करती है। इसलिए ये जो कंफ्यूजन हुआ है ना, इसको थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि क्लाइमेट का और एग्रीकल्चर का इतना नजदीकी रिलेशन है, जिसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे बच्चे का अपनी मां के पेट में 9 महीने प्लेसेंटा के जरिए एक रिलेशन रहता है, हमारी एग्रीकल्चर का हमारे प्राकृतिक पर्यावरण से ऐसा ही रिलेशन। इसमें जो कुछ बातें आ रही हैं, कुछ हमारे सामने फैक्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि कुछ साइंटिस्ट और कुछ रिसर्चर ये बता रहे हैं कि जितनी क्रॉप के लिए रिक्वायर्ड जो टेम्परेचर है, किसी भी क्रॉप के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, अगर उसमें आने वाले दिनों में 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बीट की जो प्रोडक्शन है वो 41 से 52% तक कम हो जाएगी, और राइस की जो प्रोडक्शन है 32 से 40% तक कम हो जाएगी। और ऐसी तरह जो इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट रिसर्च सेंटर है, उसका मुझे अनुमान है, अंदाजा है कि 2030 तक ग्लोबल वार्मिंग से 24% मेज का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और मैं इसको ज्यादा और बात नहीं करूंगा, मैं एक बात ये करना चाहता हूँ कि कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर CO2 बढ़ेगी तो जो हमारे पर्यावरण है ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उसकी खुराक जब उसको ज्यादा मिलेगी तो शायद वो ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन एक एक्सपीरियंस हमारे सामने आया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर CO2 एमिशन बढ़ता है, टेम्परेचर की सॉरी, जैसे जैसे CO2 एमिशन बढ़ता है, तो राइस में, मेज में, व्हीट में और सोया में आयरन, जिंक और प्रोटीन की कमी आनी शुरू हो जाती है। इसका एक्सपीरियंस हुआ है 3 कंट्रियों में। ये 3 कंट्री है, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है कि CO2 एमिशन बढ़ने से हमारे जो ये इसकी मैं बात की है, इसमें आयरन की, जिंक की और प्रोटीन की कमी आती है। और जिसका उनका एक अंदाजा ये है कि जो खाते पीते लोग हैं, मैं गरीब लोगों की बात नहीं करता, आप जैसे जो खाते पीते लोग हैं जिनको खूब खाने को मिलता है, उनमें 2050 में 140 मिलियन पीपल ऐसे होंगे जिसमें किसी न किसी चीज की डेफिशिएंसी रहेगी, चाहे वो प्रोटीन की है, चाहे वो जिंक की है, चाहे वो आयरन की है। और कारपोरेट उसको पूर्ति करने के लिए टेक्नोलॉजी के लिए तैयार बैठा है। उसने जिंक की भी गोली बना रखी है, और उसने आयरन की भी गोली बना रखी है, और प्रोटीन की भी कैप्सूल देने के लिए तैयार है, और फोर्टिफाइड राइस भी उसने बना रखा है कि जितनी इसमें कमी आएगी तो हमको फोर्टिफाइड राइस के जरिए कर देंगे। इसलिए अगर हम इन्वायरमेंट को नहीं बचा सकते तो एग्रीकल्चर नहीं बचेगा, और एग्रीकल्चर नहीं बचेगा तो फूड सिक्योरिटी है
इम्यूनिटी की, कि इसको कोई भी स्पीड पर पारित नहीं कर पाए। इसलिए इसका एक ही मतलब तरीका है कि आप अगर हम जहां भी जैसा भी मिट्टी का नेचर है, हमारी सॉइल का जैसा नेचर है और वहां का जो क्लाइमेट है, उसके हिसाब से अगर हम क्रॉप को ग्रो करेंगे और उस तरीके से अगर हम एग्रीकल्चर को चलाएंगे तो एग्रीकल्चर चल सकती है। और जो प्रो नेचर प्रो ह्यूमन एग्रीकल्चर है वो एनवायरनमेंट को सस्टेन करने में काफी बड़ा योगदान दे सकता है। अगर हम एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को बचाना है तो हमारा जो सोशल डेवलपमेंट मॉडल है उसमें एग्रीकल्चर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमें लाना पड़ेगा और एग्रीकल्चर को फर्स्ट प्रायोरिटी के पर लाके हमारा मानना ये है कि 50% बजट है वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, वो नेचुरल एग्रीकल्चर के लिए एक अलग बजट की तरह, जैसे पहले रेलवे का एक अलग बजट होता था, ऐसा एक बजट हमें बढ़ाना पड़ेगा जिससे हम बायोडाइवर्सिटी को भी बचाएंगे और चीजों को भी बचा सकते। और लास्ट में मैं टाइम मेरा खत्म होने वाला और मैं एक ही बात कहता हूं कि जो एग्रीकल्चर है इसमें एनवायरनमेंट को सस्टेन करने की एक बहुत बड़ी नेचुरल एग्रीकल्चर में कैपेसिटी है, उसे हम कर सकते हैं। और इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत है कि जैसे किसी फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ वो लोग हो सकते हैं, हमारे खेत में कितना प्रोडक्शन हुआ हम फार्मर लोग वो नहीं, वो सबके सामने मतलब उसको ये नहीं कह सकते कि हमारे तो बीट ही नहीं हुई, हमारे तो इतनी हुई है, क्योंकि वो खेत हमारा सारा गांव देखता है, पूरा समाज देखता है और कारपोरेट उसको जीपीएस के जरिए देख रहा है कि इसमें कितनी हुई है, उसको पता चल जाता है। हमारे को शायद थोड़ा मोटा अंदाजा इधर उधर हो जाए, लेकिन कारपोरेट के तो जीपीएस लगा हुआ है, वो तो मेरे हर खेत की वो कर रहा है ना बिलेंस के पानी कब लगा रहा हूँ, ये कब कर रहा हूँ, सब मोबाइल बंद करिए। और उसमें इक्विटी भी आ सकती है जिसकी हम बात करते हैं कि सबको, गरीब लोगों को भी हम खाने के लिए। और एग्रीकल्चर में जो पुराना हमारा नेचुरल एग्रीकल्चर था उसमें सोशल सिक्योरिटी एक फैमिली में, एक गांव में थी और उस पूरी सोशल सिक्योरिटी को हम एक समाज के रूप में दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। सो मेरा टाइम बहुत थोड़ा था, बस मैं तो अभी स्टार्ट ही करने वाला था और मेरा टाइम खत्म हो गया, इसलिए मैं ज्यादा आपका समय खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि साइंटिस्ट लगता भी नहीं। हम सरकार से नहीं डरते, कारपोरेट से नहीं डरते, लेकिन इनसे इसलिए इनके खिलाफ हमें वो कर नहीं सकते ना, अपने घर वालों के खिलाफ कैसे एजिटेशन करें, उनके खिलाफ वो एजिटेशन भी कर लेते हैं। इसलिए आप सबने सुना, बहुत बहुत climate and agriculture are related like the relationship between the fetus and the mother. As the fetus is connected with the mother through a placenta, agriculture is connected with the climate like this. Any increase in the temperature between 2 and 4 degrees will reduce wheat production by 40%, the rice production by 30%, and maize production by 25%. As CO2 increases, correct carbon dioxide. Go ahead, sir, go ahead. We are live to the world, sir, please go ahead. Sir, go ahead. you mean figures Live world, go ahead. You're right. You're correct, go ahead. Continue, sir. as CO2 increases in USA, Japan and Australia, they found that iron content of rice, maize, wheat and soya are reducing. Right, that's it. And by 2050, it is projected that 140 million people in these countries
will have different kind of deficiencies, including iron deficiency. And the corporate sector has begun preparations to make different kind of tablets to overcome these deficiencies. If environment is not safe, there will not be any agriculture, and of course if there is no agriculture, there will be no food. So what is the solution? The solution is pro-nature and pro-environment agriculture. What we are demanding, that all governments give first priority, all governments, central and state governments, give first priority to agriculture in their budgets, allocate 50% of their budgetary allocations for agriculture. In fact, we demand that there should be a separate representation in the parliament for agriculture like railways and other areas. And pro-agriculture, pro-nature, pro-private agriculture can also save biodiversity. In fact, he said that unlike the industrial production, agriculture is very transparent because we cannot hide anything. So it is very important that we save this method of pro-nature agriculture. Thank you. Wonderful. सुखदेव जी बहुत बड़ी बात कह दी है, मैं पॉइंट आउट कर दूँ नेचर बेस्ड कॉर्पोरेट भी कहता है कि हम नेचर बेस्ड बना रहे हैं, लेकिन हम साइड में और यही इन्होंने कहा नेचर ह्यूमन बेस्ड। इन्होंने कहा आपका जो विषय है जो हमने रखा है तो उसमें मैं भी साथ में साझेदार सब साथ हमने इसको नेचर बेस्ड नाम दिया, ये गलत है नाम, ये वन साइडेड है, इसको कॉर्पोरेट यूज करेगा, नेचर ह्यूमन बेस्ड, इसलिए ये सब्जेक्ट को ही इन्होंने बदल दिया। मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ इस बात। अब मैं आपके सामने श्री कुमार जी जो है बात पेश करें। श्री कुमार Good morning, and I will be speaking English, and somebody will translate it in Hindi. Yeah, so Kirti has said we need make the human-based solutions. Since he said he didn't have enough time to say what he wanted to say, he stopped in the Come this side. Excuse me. So, Come this side. Yeah. Keep the mic close to your mouth. So, I will say what my idea is about what farming is to be, and if there is something in which we differ, or even differ here, we can change it. So, till now, of course, we have been doing chemical-based farming, and that farming activity itself is extractive, like the rest of the economy. So we have to consider the agricultural land we have and the plants we grow itself as part of an ecosystem, and we should not see it as an infestation, as just a profit-making enterprise. So in nature, of course, diversity is the rule. So even on agricultural land, we should have diversity. We should understand the interrelation between plants as well as the agricultural environment. So crop rotation and mixing of crops is part of this. And of course, there is no standard method. Each ecological region will have to develop its own method. So one thing is, agriculture is not just for producing our food. In the present context, in addition to providing our food, we should also rebuild soil fertility, stop further erosion of soil, rebuild water security, as well as preserve biodiversity. Moreover, in addition to producing food, we should produce a lot of other things like fodder, fuel, medicines, timber, fiber, and a lot of other things for which we have come to depend on industrial products. And we know the rest of industry is extractive. Agriculture can be made non-extractive. Of course, we have made it extractive. So agriculture in our economy is the only part of our economy in which solar energy is stored, and
That is the only part of the economy in which carbon sequestration takes place. In all other parts of the economy, we are doing carbon emission and using energy, consuming energy. So we have now agriculture itself cannot be seen in isolation. It is part of our society as a whole. There is a political economy behind it, and there is a social organization that has evolved when the entire economy has become extremely extractive, that is after the industrial revolution. So, since all economic activities are carried out for profit maximization automatically leads to extraction, and we have technologies for extraction. We have developed technologies to make even agriculture extractive. And when everything is done for profit, agriculture also, people who are in agriculture also have the compulsion to be extractive. So we have now, systematically shifted our people from agriculture to other sectors of the economy. Right? So, yeah. So, as I said, when we do carry out our activities for profit, extraction is more profitable than doing anything sustainably. So, unless there is a deterrent against extraction, everyone will do extractive activities. And even when agriculture is extractive, the gains of extraction in other manufacturing is much more than in agriculture. Because in agriculture, just by doubling the inputs, you can't double the outputs. In any other sector of the economy, you can do that without increasing land use or without increasing workforce. In agriculture, it's not possible. Even if you do it entirely based on external inputs. So the profits, gains of extraction are also more in non-agricultural activities. And even if the government doesn't actively promote industry, there will be an incentive for people to move out of agriculture. And of course, since we have labor-saving devices in agriculture, this has facilitated it. Now, what I want to say is, if we want to make, climate change, of course, it has been said before also, it's just one of the symptoms of the fact that our society itself is unsustainable. If we want to make it sustainable, then most people in our society should be dependent on economic activities which are not extractive. Now we have shifted most of the population into an economy which is extractive. Most of our people are earning their livelihoods from extractive activities. We should have more people earning their living from non-extractive activities, which means that the shift of population from agriculture to other activities should be reversed. This will not happen unless there is a conscious policy to deter extraction. We don't have such policies, and as of now, even our people are not ready for it. If any party comes with a manifesto of saying that we want to move people back to agriculture, I don't think it will win an election. So I think if we are to bring about this change, a lot of work needs to be done on the ground to make people ready for it, and that is the job of activists. Without this groundwork, I think any demand we make from the government will not work. It will be like trying to grow something without preparing the soil. This is what I would like to say now. Let's see. Maybe people will respond to it. खेती और पेड़ पौधे ये सिर्फ प्रकृति का ही नहीं बल्कि जैव विविधता के नाम है। और जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग बातें आती हैं, जैसे फसल बदल के खेती करना एक तरीका हो सकता है। एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि खेती सिर्फ अन्न नहीं पैदा करता, खेती हमारी जैव विविधता को भी बचाता है। खेती धरती पर के अन्न चक्र को भी पूरा करता है। खेती को अगर पर्यावरण को बचाना है तो खेती को नॉन एक्सट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। टेक्निकल टर्म है, मेरे हिसाब से उसको हिंदी में हम निकासी के खिलाफ शोषण निकासी पद्धति के खिलाफ होनी चाहिए, वो जो पर्यावरण के स्वरूप होनी चाहिए। और बाकी जितने भी आर्थिक व्यवहार है, जो व्यापार है, वो मुनाफे के ही लिए किया जाता है। लेकिन खेती जो है उसका आधार मुनाफा नहीं होता है। लेकिन
आज के इस कॉर्पोरेट जगत में खेती को भी मुनाफाखोरी से जोड़ दिया गया है। इससे सिर्फ खेती का ही नहीं, सबका नुकसान हो रहा है। और इस विकासीय खेती से, एक्सट्रैक्टिव एग्रीकल्चर से ज्यादा मुनाफा मिलता है। इसलिए ज्यादातर लोग पर्यावरण खेती को छोड़कर, प्राकृतिक खेती को छोड़कर इस निकासी खेती की तरफ मुड़ रहे हैं, जिसका बहुत ज्यादा विपरीत परिणाम हमारे पर्यावरण पर हो रहा है। एक बहुत बड़ी बात यह है, सच्चाई यह है कि पर्यावरण का बिगड़ना यह हमारे समाज के बिगड़ने का प्रतिबिंब है। इसका मतलब यह है कि अगर हमको पर्यावरण संभालना है, पर्यावरण को बचाना है, तो हमारे सामाजिक व्यवस्था को बचाना पड़ेगा। सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाकर उसको उसके अपने अच्छे स्वरूप में रखना पड़ेगा। और जब तक हम ये नहीं करेंगे, तब तक खेती से होने वाला पलायन नहीं रुकेगा। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि खेती से पलायन करके जो लोग दूसरे जगह चले गए हैं, उनको वापस खेती में लाया जाए, तब शायद हमारा परिवार बचे। मेरे विचार से श्री कुमार जी ने बात जो है वो जबरदस्त बात कही है। और वो बात सीधी सीधी है कि ये जो औद्योगिक खेती है, इस वक्त जो खेती चल रही है केमिकल, या जिसको जीएम को, वो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। और जब से इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर ये बायोलाइफ के खिलाफ है, जीव जगत के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, ये साबित हो गया। और ये साबित हो गया 200 साल में कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने नेचुरल रिसोर्स को और ह्यूमन कम्युनिटी को कंट्रोल किया। पीपल का एम्पावरमेंट बिल्कुल नहीं होने देंगे, यानी जनता का, किसानों का, मजदूरों का, किसी का एम्पावरमेंट नहीं, सबको अपने कब्जे में लो। ये है कॉर्पोरेट सिस्टम। इसलिए इन्होंने बात दोनों कह दी है कि अगर हमने समाज नहीं बदला, पर्यावरण को ठीक नहीं कर पाएंगे। डिह्यूमनाइजेशन ही अगर हम नहीं मिटा सकते, हम बाहर नहीं रोक सकते ये ब्रेन का, तो हम एक सप्ताह, हम 10 दिन में आत्मघात को कर सकते हैं। ये तो हमारा डिह्यूमनाइजेशन पूरा ग्लोब का वो पड़ा। इसलिए एक तरफ सोसाइटी को बदलना, एक तरफ क्लाइमेट के लिए प्रो नेचर प्रो एजेंडा लाना, ये तो हमारा काम है। अगर ये नहीं कर सके तो नहीं होगा। मैं तो बाबा करने वाला हूँ। I think my two previous friends, who are cleanser practitioners, जो पहले करते हैं बाद में बोलते हैं। I happen to be a professor, but I was also a practicing farmer, and I have seen both chemical industrial farming and the ruin which brings about, and the advantages of natural farming for humanity and nature. So, I think first and foremost, we are such a knowledgeable people. Close. हम वो लोग हैं क्लोज लगा लीजिए। जो इस दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन हमको बदलने से पहले समझना होगा इस what is the genesis of this crisis, जड़ क्या है, and the genesis of the crisis is that this farming, industrial and chemical farming, is imposed upon world by the Yeah, please. क्योंकि आवाज उनकी chemical and industrial farming is brought about in the world by the forces of the greed. The natural agriculture is the agriculture of need, and the crisis was very precisely understood. Crisis of agriculture is not the crisis of agriculture alone. It's the health
cultural crisis is a part of the societal crisis, civilizational crisis. And Gandhi drew attention to that in his seminal work in 1909 in Swaraj. Gandhi, and if you see Gandhi's that seminal work, only work which Gandhi himself translated. And you see the list of the books that he has written. He took his data from R.C. Trump's Economic History of India, how the farming world over, how it has been growing. But the majority of farmers' organizations and leaders, including the recent farmers' agita, unfortunately, has not fully grasped it. They have been supporting the wrong model of Punjab development, not the model of development that Sukhdev Singh ji would like us to understand and practice. So friends, Henry David Thoreau, he said that it is no hacking at the branches. डालियां छाटने से कुछ नहीं होगा। आपको जड़ पे प्रहार करना होगा। A root cause analysis, and root cause analysis is that industrial and chemical agriculture cannot be sustained because we need food. And at a particular point of time, Punjab was being used, where it is growing, to bail out from the crisis. But that was a shortcut. It was a, political game and ecological cost. You have created a self-sufficiency which is a very distorted. Just one very atrocious example of this is you grow rice in Punjab under chemicals, heavy chemicals, which is no rice at all, and you feed it to the people in Kerala, which is a paddy land. What kind of agriculture? Look at the contradiction. So Food Corporation of India turns out to be food corruption of India, because you are carrying food 3,000 miles and call it an efficient public distribution system. So as Henry David Thoreau has said, we will have to make a root cause analysis, and instead of hacking the branches, make an analysis which takes us to the action these friends have in detail talked about. Why after all they did it? Because they wanted to control. When you wanted to feed a population in agriculture and population in cities, you needed a captive food stock. And that captive food stock was thought to be gained by this chemical and industrial agriculture. So R.C. Dutt, or even for that matter Dadabhai Nauroji's book, Poverty and Un-British Rule in India. Dadabhai called it un-British rule. Because what you are saying, because you just take the two examples. Albert Howard, National Commission on Agriculture or Royal Commission on Agriculture before that, Commission on Agriculture came in 1927. Albert Howard and his team was later brought, and he wrote a book called Testament of Agriculture. We are sitting in a missionary organization. This Testament of our Agriculture is a seminal document, and Albert Howard said that the Indian farmer, Malwa ka kisan, is itna mahir hai, he is so expert. He knows how to grow a crop under the condition of receding and residual moisture. We are talking about the millet, being the food of the nutritious food. Singh has talked about the deficiency, micronutrient deficiency in the food, and all our soils are mined in this way, that the micronutrients are mined, and after the soybean crop in Malwa, or for that matter, now in large parts of Maharashtra, is ruining the soil.
because agriculture, as Sri Kumar has said, is not extractive. Extractive agriculture cannot sustain. And we need agriculture which is regenerative. As of now, I think the green revolution has the most adverse effect, and its casualties already in Punjab. The soils of Punjab are one of the worst affected soils today in the country. And human beings in Punjab are one of the worst affected. You have one cancer train from Bathinda and area to the treatment centers. So what kind of agriculture that we have brought about and built? What we call food is not food at all. And it has such a circular consequence. And for friends, I mean, to such a informed people, I may not tell you that agriculture is a cycle, climatic, hydrological, and nutrient fixing. Fixing of nitrogen was known to the humanity hundreds of years or thousands of years ago. Urea is not the one which fixes the nitrogen instantly. Nitrogen is fixed by the mixed farming, legume farming. But those are larger questions that we have to grapple, and I want to follow my friends in keeping up to the time. So for next 2-3 points that very quickly I want to make is this: to come out of this racket. Yes, we are caught in a trap, and to come out of this trap, first and foremost, we have to bid goodbye to this green revolution agriculture. Industrial agriculture, chemical agriculture. Yesterday I was giving an example. This year, Government of India subsidy to the chemical fertilizer will be beyond 3 lakh crore. Food we are subsidizing to the extent of 3 or 4 lakh crore. And that is not, that money doesn't go to really better the farmer's income. Take one very broad number. In 1954, 51 and 50 first plan of 100 rupees, to put in a very simple language, 54% went to agriculture, private sector. Today, how much goes to agriculture? 70, 15, 60. In my state, Maharashtra, only 10 or 12. And the number of people dependent on agriculture is almost the same, or maybe reduced it to 48%. But we have to have an alternative vision of agriculture. I don't have a time, but way back in year 2000, I was invited to write a paper on alternative vision of agriculture for Indian Science Congress held in Delhi. And I just taking statistics and quoting Swaminathan himself, said that we are at a critical crossroad where this kind of agriculture will simply not sustain. It is neither equitable nor sustainable. Friends, today, air we breathe, water we drink, food we eat, is all polluted and poisoned. Is that agriculture is supposed to nourish, and if half of the Indian soil are degraded, I think what will be left? India has a 2.4% of the world's land, 9% of the world's food production. We have to sustain 70% of the population on that. But only agriculture that can bail us out. To one of my friends, my wife, women are more down to earth, and that's why the first book first serious study on green revolution agriculture was Shiva, when she said green revolution, violence of green revolution in Punjab, and then she said women and ecology. So Singh, I would add to what you are saying. You need not only agriculture but economic development model which is a pro-nature, pro-women and pro-poor. Unless we are trusting a totem par sara chal raha hai, and we don't want that kind of agriculture. And here let me just mention the name, 2-3 names. A very
profound scientist by name Rachel Carson. In her book Silent Spring, she has warned the world because soon after DDT she was responding what is happening to biodiversity. The Silent Spring जो किताब है अद्भुत है 1962 and thereafter whole climate debate came 1972 conference in Geneva 1982 UNCD United Nations Commission on Environment and Development 1992 Rio Conference 2002 Rio Plus 10 Johannesburg 2012 Rio Plus 20 and now 2022, we are staying. At the high closing, I would like to end with a suggestion. See, if you practicing farmers and thinkers here think it is worthwhile. I think need of the hour for not only for India, but the world, and to mitigate climate is low external input sustainable agriculture, what they in short call LISA model of development. जो in situ farming होगी based on the soil, and let me quickly add that rain-fed farming need not be gamble. We can stabilize how people on a 200 millimeter, 300 millimeters of rainfall in western Rajasthan and large parts of the Deccan Plateau grow millets pulses. We spend 1 lakh crore rupees on importing edible oil, 10 lakh crore on importing the oil. What kind of economic model we have? So friends, before the chairman asked me to stop, I would like to say, and it is his right to do so, I think time has come when we have to say, and this is what I said to Amar Pesme when we had Indian Ecological Society's conference in Delhi. Enough is enough. जो कुछ आपने कर लिया बहुत हो गया है, और हमारे and now at the end of the day we need to educate our political master. हमारे देश में संसाधनों की निरक्षरता है, जो किसान सब समझता है उसको हम गवार कहते हैं कि फार्मर who understand his soil, who know how to do farming, उसको हम गवार कहते हैं. And scientists who once go to the American and other labs and come with the GMO, ये genetically modified नहीं है, modified हो गया. ये GMO जो है वो modified हो गया. So I mean we are talking seriously. So not get into the triviality, but time has come. I think we have to get out of this trap. All of us here, we are, हम दादा की उम्र में हैं, we are in a stage where we are grandparents, and if we want our nati poti to really have nutritious food, I think message of Indian agriculture, as a lecture every year in memory of Albert Howard, we can Vandana Shiva conducting the India International Center every year of वो lecture लिखी है, and I think one of the scientists has said it beautifully, and I will end with that. What is the message of Indian agriculture? हिंदुस्तान का किसान बहुत माहिर किसान है. He is the sole resource literate. He may not be formally literate. उसको आप गवार कह दीजिए, but he is a real resource literate. He is the wise, and we are otherwise. Many of these professors could talk about agriculture. I think how to grow nutritious food non-violently is a message of Indian agriculture to the world agriculture, and all parampara, all traditions of this country, whether you take Buddha or come to Gandhi, and through all that you meet the sages and saints of India, including Guru Nanak, and as a Punjabi farmer, that beautiful anecdote when he was told, he told Daniel Farmer was
one of the outstanding experts on agriculture. Yes, sir, you have given us this modern farming. ये ट्रैक्टर आ गया है, लेकिन गोबर कहाँ से आएगा, खाद कहाँ से आएगा? जमीन को तो खाद चाहिए, जमीन को ट्रैक्टर नहीं चाहिए. And plow in the world, iron plow in the world has done more harm than the even gun. हल का जो लोहा है, उसने जमीन को बर्बाद कर दिया है. And only way to restore it, a non-violent agriculture, is to have the earth work and bees in our party. मधुमक्खी और ये केचुए वही हमारी खेती को बचाएंगे. That is the only way to enrich the soil. We will live by soil, not by oil. Thank you so much. Wonderful, wonderful, wonderful. And he already has done it. अगर ट्रांसलेशन की जरूरत हो तो आप खड़े करो, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे चलो. चलिए. नहीं जरूरत करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया. जी ने मुझे पावन अब मैं सरदार सिंह जी को जो है जैसे बताया, मेरा नाम दीदार सिंह है और प्रैक्टिकली मैं नेचुरल खेती कर रहा हूँ घर पर. और इसमें मैं एक बात समझता हूँ कि जो खेती है, एग्रीकल्चर जो है, ये लाइफ लाइन है ह्यूमन बीइंग और जितनी भी बायोडाइवर्सिटी. और इस लाइफ लाइन को कैसे हमने इसमें विचार रखना है, वो कैसे है, उसमें मैं थोड़ी सी बात कहूँगा और कोशिश करूँगा कि टाइम का ख्याल रखूँ. इसमें दो किस्म के प्रोसेस हैं. एक तो है नेचर का पार्ट है और एक सोसाइटी का पार्ट है. और नेचर का पार्ट जो है वो एग्रीकल्चर में इस तरह से है कि जैसे सनलाइट है, ये एग्रीकल्चर के लिए चाहिए. और सनलाइट जो है वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती एग्रीकल्चर के साथ. मूनलाइट है वो एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती. और एयर है, वाटर है, लैंड है, फॉरेस्ट है, बायोडाइवर्सिटी. और हमारी यहाँ इस अर्थ प्लेनेट पर एक्टिविटी से इसमें गड़बड़ है. अगर एयर की स्पीड बढ़ जाती है, तूफान आ जाता है, तो किसान की फसल तबाह होती है. जिसमें हम देखते हैं कि जैसे वाटर है, पानी है, ये दो किस्म का है. एक तो हेल्दी है, एक नॉन हेल्दी है. हेल्दी वाटर से क्या बनेगा और नॉन हेल्दी से क्या बनेगा. तीसरी बात यह है कि जो फॉरेस्ट है ये किसान को सपोर्ट करते हैं. और बायोडाइवर्सिटी बड़ी और छोटी, छोटे छोटे जीव और बड़े बड़े जीव जो हैं ये एग्रीकल्चर के साथ सारे जुड़े हुए हैं. कुछ सपोर्टिंग में है और कुछ नुकसान करते हैं जिनको जरूरत है मेडिकेशन. ह्यूमन सोसाइटी जो है, इसका सर्वाइवल जो है, मैंने जैसे कहा लाइफलाइन है, तो ये एग्रीकल्चर पर डिपेंड है. और एग्रीकल्चर सिर्फ मोड ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, ये जितने भी ब्रांचेस है ना हमारे नेचुरल साइंस और सोशल साइंस की, वो एक यूनिट में काम करते हैं. और जिस तरह से हमारा एग्रीकल्चर आगे बढ़ रहा है, देखिए हम जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो हमने शिफ्ट किया कि नेचुरल एग्रीकल्चर से केमिकल फर्टिलाइजर में या केमिकल एग्रीकल्चर में. और उसमें हुआ क्या कि जितना भी लार्जेस्ट एग्रीकल्चर फार्म है दुनिया का, लार्जेस्ट एनिमल फार्म है जो मोंटनजियांग फार्म है चाइना का, लार्जेस्ट डेयरी फार्म है, सीड है, फर्टिलाइजर है, सारे जो है ये कारपोरेटर्स ने कंट्रोल कर. और उसके कंट्रोल से हुआ क्या, कंट्रोल करके दे क्या रहे हैं हमें जो मिल रहा है उसमें 8 to 8 million people were affected by hunger world में. 2.3 million people food stress. 3.1 billion could not support a healthy diet.
और बच्चों के लिए क्या दिया? 149 मिलियन अंडर 5 years माल न्यूट्रिशन टेस्ट, 39 मिलियन जो है वो ओवरवेट है और 45 मिलियन जो है वो वेस्टिंग। और अगर हम इसको देखें तो ग्लोबल जितनी प्रोडक्शन हमारी एग्रीकल्चर में हो रही है उसकी 1/3 जो है वो वेस्टिंग। और इसको हम देखें तो इस तरह से है कि जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं वो कंटिन्यूसली इसमें वर्क कर रहे हैं। जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लिया या केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल खेती लाई, उसके बाद अब ये नई टर्म लाए हैं कि हम दुनिया को कैसे बचाएंगे, और वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फूड। और जब जीएम फूड जो है उसको वो उन्होंने अल्टरनेटिव देखा है तो उसमें ये बना है, उन्होंने अल्टरनेटिव देखा है तो उसमें ये बना है कि इस समय जो जीन्स है उसकी क्रॉसिंग हो जाती है और इसकी कॉस्ट जो है एग्रीकल्चर के लिए वो बढ़ जाएगी। जैसे नेचुरल फार्म में बढ़ी नहीं थी, केमिकल में बढ़ गई, अब जब जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा तो फार्मिंग जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसका जो इफेक्ट होगा वो कुछ डिजीज जो है वो नहीं लाएंगे, जिसमें ओबेसिटी है, मोटापा है, जिसमें डायबिटीज है, जिसमें ऑटिज्म है, नर्व सिस्टम हमारा, एस्थमा है, हार्ट डिजीज है, कैंसर है, एलर्जीज है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर इफेक्ट करेगा जो प्रॉब्लम पड़ेगी। और जो जीएमओ फूड है इसमें होता क्या है कि हम जेनेटिकली मटेरियल जो है या डीएनए जो है किसी एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म में ऐड करते हैं तो वो फूड हमारे पास आती है। जैसे ब्राजील नट जो है उसको हम सोयाबीन के साथ मॉडिफाई करते हैं, और जिसको एलर्जी होगी नट से वो सोयाबीन यूज करेगा तो उसको एलर्जी होगी, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। इस तरह से जीएमओ फूड से क्या होगा कि जब इसकी क्रॉसिंग होगी ना तो हमारे प्लांट्स जो है ना उन पर इफेक्ट होगा, और जब प्लांट्स पर इफेक्ट होगा हमारा एनवायरनमेंट जो है वो सारा खराब हो जाएगा, हम उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। और जब ये प्रोसेस से आएंगे तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको अगर बचाना है तो अभी आपने देखा COP27 में नेट जीरो कार्बन का है कि 2030 में डेवलप्ड कंट्रीज खत्म करेंगे और 2040 में डेवलपिंग। इससे क्या होगा कि जब जो एक लाइन लगा दी है तो ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है कि हमारा सर्वाइवल जो है वो वही तक है 2040 तक। और इन कॉन्फ्रेंसेस में जैसे मैंने पहले स्टार्ट में कहा हमारी लाइफ लाइन जो है वो एग्रीकल्चर है, और अगर एग्रीकल्चर खत्म हो जाती है ना तो एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा, और एनवायरनमेंट खत्म हो जाए इंसान बचेगा नहीं। इस पर सोचने की बात है और अब किया गया जाए, वापस जाने की जरूरत है कि हम नेचुरल खेती पर जाए, और ये जाया जा सकता है अगर नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट की जाए और इसमें गवर्नमेंट जो है, वर्ल्ड गवर्नमेंट जो वो सपोर्ट करे कि 50% बजट जो है वो एग्रीकल्चर फॉर्म में लाए और इसको ये नेचुरल फार्मिंग से करने शुरू करें तो बहुत सी हमारी वाइल्ड को बच सकती है, हमारी जनरेशन जो है बच सकती है, आने वाली जनरेशन जो है वो तभी बचेगी। थैंक यू। He was talking about lifeline. So he was connecting, he was saying that our lifeline is based on agriculture, and if agriculture is based on environment, and if we cannot protect the environment,
the whole lifeline is going to be affected. And he was saying that there are two aspects for agriculture. One is about the human aspect, other one is about nature. And nature gives sunlight, moonlight, air, water, etc. supports the agriculture practice. And nature does not show any discrimination for giving natural resources, but human part or human side there is lots of discrimination. And if it is disturbed, because of human intervention, the ecosystem is in collapse or is being disturbed, and this disturbance affects the human beings or our life itself. And then he was talking about how the agriculture system is supported by nature. For example, forests support biodiversity, which is very essential for agricultural practice. And another aspect what we discussed is how the production based on extractive economy is depleting the natural resources, and now the agricultural practice based on extractive economic system is depleting and affecting the resources which is essential for our survival and lifetime. Then he was critically looking at green revolution, and the green revolution scientists who brought green revolution caused to lose the farmers' independence and their autonomy, and they made the control of seeds, fertilizers, all the aspects on corporate system, and because of this, the farmers have to depend on corporates. And then he was talking about how it is affecting the lives of millions of people who are deprived of food, nutrition, and also there are other aspects. When there is malnutrition, other side you can find people suffering from obesity as well. So this kind of contradiction was brought by the corporate control of the whole agriculture system. Then we talked about how the scientists who brought green revolution. The next step they brought genetically modified seeds, and this is also having great impact on life. And this is causing a lot of diseases like autism, asthma, cancer, so it is affecting the human health. So now the government is talking about net zero in 2030, and he said that if we want to achieve this, we have to turn to nature-based agriculture practice. And for this, the government should be ready to devote at least 50% of its budget for nature-based agriculture practice. Thank you. आपके सामने जो विषय था, जो हमारे एक्सपर्ट थे, उन्होंने शॉर्ट में बातें रख दी। अब सारे साथी इसके ऊपर जो भी कहना चाहें, सवाल करना चाहें, सबसे बढ़िया बिल्कुल आपको देता हूँ। और बाकी कोई अपना विचार भी देना चाहे तो ये खुला है, 1 बजे तक अपने को डिस्कशन करना है, बीच में बस चाय पिएंगे, बाकी सारा वो निमंत्रित है। तो आप देवन जी चाय कितने बजे मिलेगी आगे बता दीजिए। ठीक है, सबको जिंदाबाद। मैं शुरुआत पूर्वी जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वयक में सब पंजाब तरफ से जो भाई लोग आए हैं उसकी बहुत खुशी है। मैं चाहती हूँ कि कोई बहनें भी आती हैं, क्योंकि खेती में बहुत योगदान महिलाओं का है जो सामने नहीं लाया जाता। और पूरा जो इस दिनों का आंदोलन हुआ, इसमें मेरा दुख है कि मैं खुद नहीं जा पाई, लेकिन हम बहुत सारी महिलाओं ने वहाँ पे बहुत अच्छा योगदान दिया और गांव-गांव में भी महिलाएं उसके समर्थन में मंच चलाती थी। एक महिला किसानों का संगठन भी बनाए हैं और मुझे लगता है कि आगे भी कोई भी हमारी कॉन्फ्रेंस के पैनल खेती के बारे में विशेषता महिलाओं के बिना ना हो। उनका मैं कल भी जो बात की कि पर्सपेक्टिव की बात है, एक नजरिए की बात है जो आप लोगों ने भी रखा, लेकिन वो महिलाओं से आता है
कि वो एक चीज की बात नहीं करती, वो हरदम हर चीज के साथ एक समग्र सोच करती है। तो ये एक मुद्दा मुझे करना था। मैं विज्ञान वाली हूँ, खेती मैंने कभी करी नहीं है, लेकिन बहुत लगाने के जिक्र कर रही हूँ। दूसरी एक बहुत जरूरी बात है हमारे पॉलिटिशियंस को सेंसिटाइज करने की और सिखाने की। परसों ही इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्रेस इकट्ठा करके बातचीत होती है, तो हमारे जो पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव जी, शायद मेरा नाम सही है, तो उन्होंने एक प्रश्न के जीएम के अगेंस्ट के सवाल को जवाब दिया कि अरे हमारे यहाँ आज भी 40% तेल ये ऐसे कंट्रीज देशों से आता है जहाँ पे जीएम ही चलता है। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं वहाँ तो नहीं बोल सकती, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वहाँ मैं ऑनलाइन पढ़ रही थी कि पहले तो ये बात मुझे याद है, मैं जब 8वीं कक्षा में थी तब भारत में ऑयल सीड्स का लगाने को डिस्करेज किया गया। हमारी आप लोग ज्यादा जानते कितने सारे किस्म की तेल पिया रहती थी, और एक राई में भी कितनी सारी वैराइटीज थी। तो हमें कोई जरूरत नहीं थी विदेश से तेल लाने की, लेकिन विदेश को मार्केट देने के लिए हमारे यहाँ का तेल पीओ का बोना बंद करवाया आपने, और आज बहुत बेशर्मी से बोल रहे हैं कि 40% जीएम तो आ ही रहा। पहले तो ये बहुत गैर कानूनी बात है, और ये बहुत बेजिम्मेदारी की बात है कि ऐसा हमारा पर्यावरण मंत्री कुछ कह पाए। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि सरकार में से जो भी बात में जाएगा या रिजोल्यूशंस निकालेंगे, उसमें हमने उनकी बात का बहुत कड़वा निषेध करना चाहिए, और ये रिजोल्यूशन देना चाहिए कि कम से कम हमारे मंत्री गैर कानूनी बातों को इस तरह से आगे न लाए, और ये एकदम प्रक्रिया करें, चाहे तो हम तेल कम यूज करेंगे। बहुत सारे ये जो हमारी क्या होटल इंडस्ट्री चलती है, उन्हीं के लिए जीएम बुलाया जाता होगा और जबरदस्ती खिलाया जाता होगा, और जीएमपी क्रॉप्स एक्सट्रीमली हजार्डस, तो इसका कड़ा विरोध होना चाहिए, और इसके लिए महिलाएं जरूर साथ में आएंगी, मैं दावा करूँ। धन्यवाद। महिला के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। चाय का टाइम हो गया है, अभी नहीं, वापिस आके करेंगे चाय की। Sir, you have been doing so many shows in regards to climate crisis. You yourself were part of United Nations Environment Program. Now, what do you expect out of this Calicut conference? And there is a serious talk that the present existential crisis is looming large over the world. Yes, after COP27, we find that the governments of the world, all governments put together, are unable to solve the climate crisis. And so it is, if the governments can't solve this problem, then people have to step in and start telling the governments what they want in very democratically and non-violent way. They need to actually put pressure on their governments on correct direction to take in order to solve the climate crisis. People have to do this because they are the ones who are going to be the most affected. People in South Asia have to do it because South Asia is going to be one of the two most affected regions in the world because of the climate crisis. This is what we want out of this conference, that people become clearer and tell their governments that this is how we want to solve the problem. So you mean to say Sapacc is going to lead the way? Lead, I don't know, but Sapacc must find the way along with all other such organizations and tell governments, not just in India,
world over that you have not been able to solve the problem. So now it is our turn to tell you how to solve the problem. Now for that, the people themselves must become clear as to what the direction is, and that is what Sapacc is all about. Exploring the way out of this problem. Some words in Hindi, because you are doing a show, 3 days conference in Malayalam heartland in Calicut. And I should be speaking in Malayalam and not in Hindi. Even Malayalam and Hindi also, because this part of the world they will understand both Hindi and Malayalam. I can't speak in Malayalam, though I can understand a fair amount of Malayalam. लेकिन मैं ये कहूँगा कि दो चीज़ें हमें करना पड़ेगा. एक कि जितना ऊर्जा हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कम करना पड़ेगा, और दूसरी बात ये है कि समाज में समानता लाना बहुत ज़रूरी है. ये दोनों चीज़ करने के बिना हम ये जलवायु संकट का जो समस्या है उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे. क्या आप सोचते हैं कि ये सपाक की जो कॉन्फ्रेंस 3 दिन की, इससे आप एक दिशा निर्देशक दे सकते हैं क्या हम केरला को, देश को और दुनिया को? हम मतलब उस दिशा में जा रहे हैं, और हमारी उम्मीद ये है कि कम से कम इसमें कई सारे कदम हैं, तो कम से कम पहला कदम जो है इस कॉन्फ्रेंस में हम उठाएंगे. क्योंकि आप खुद ऐक्य राज्य के सदस्य भी रह चुके हैं, आप वहाँ पर भी काम किया है, तो उस तरह की जो आपकी तजुर्बा है, आप ये सोचते हैं कि आप केरल ही नहीं भारत को इससे बाहर लाने की कुछ? क्योंकि यहाँ पे लोगों की भूमिका जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है. अब इतना बड़ा समस्या जो है वो सरकारें उसको मतलब सॉल्व नहीं कर सकती. इतिहास को देखिए आप, जहाँ भी बड़ी तब्दीली होने को आया है तब सरकारें तो किया नहीं, लोगों ने ही किया. उसी प्रकार अब तक जो सरकारें की है इस पर वो काफ़ी अधूरा है. इसलिए अब लोगों को आगे आके बताना पड़ेगा सरकारों को कि भाई ऐसा नहीं, हम ये चाहते हैं, ये करो. जैसे कि उदाहरण के तौर पर अब सरकारों से ये विनती करना पड़ेगा कि जितना ईंधन पदार्थ है यानी कि गैस, कोयला, तेल है उसके 90% जो हिस्सा है वो आप ज़मीन में छोड़ दीजिए. वंडरफुल. और एक लास्ट COP26 देखा है, COP27 यू हैव बीन वेरी काइंड, यू हैव पार्टिसिपेटिंग ऑन DRTSPR channels too. Now COP27, our Prime Minister, Honorable Prime Minister, he set an agenda. The same was repeated in COP27. But do you think so? He is going in the same direction by offering subsidies on chemicalized fertilizers and coal-based thermal energy. When you are indulging in such type of policies, don't you think it is diagonally or directly opposite to the commitment what he made in COP26? Then who is going to be, because all political parties have become one. अंग्रेजी में और हिंदी में भी है लास्ट वन. अंग्रेजी में कहावत है, वो ये है कि रनिंग विद द हेयर्स एंड हंटिंग विद द फॉक्सेस. यही काम चल रहा है. अब आप भी समझ लीजिए इसका मतलब क्या है. आप वहाँ पर एक वादा करते हैं और यहाँ आके बिल्कुल उल्टा करते हैं. तो लेकिन सवाल ये भी है कि सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर वादा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये समस्या जो है ये बहुत ही बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, और जब तक आप पूरे देशों को एक प्लेटफॉर्म पर नहीं लाते हैं तो इसको आप सुलझा नहीं सकते. लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर जितने मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आके फिर अपने सरकारों से कहना पड़ेगा कि भाई इस दिशा में जाओ. Before you answer it in English, when you say COP, Confederation of Parties, you are not involving the grassroots panchayats, municipalities or the people who matter. Without involving them, how do you think a change can happen and people can understand? It cannot happen, and therefore one of our demands has been that there must be absolute grassroots democracy, transparency and a democratic decision-making process. We are very clear about this, that without involving the people, all that the cops are doing is getting policymakers and getting a few scientists and getting a few politicians and trying to take decisions where they're failing actually to take decisions. So
So without involving the people, they're doing all these things. But they haven't found a mechanism to really involve people. Now they claim that they are involving a few civil society organizations, but Excuse me. this is a failure. What they have done there Excuse me. is a failure. And the earlier one in English in regards to Prime Minister's statement in COP 26-27, followed by the decisions to extract energy through coal and maximizing fertilizers subsidies and so on and so forth. And again, towards chemicalization of agriculture and the seeds also being again hybridized. How do you look at this scenario? Like I said, it is, running with the hare and hunting with the foxes. So basically, there is a huge dichotomy between climate science and climate policy. And this is something that the Indian government on its own really can't solve. It is following exactly the same thing that is happening at the international level, which is that actually if you look at what is happening in the COPs, the largest contingent that came to COP26 was the industry. And in particular, the fossil fuel industry and the transport industry had more people there than the country, than the delegates from countries which had very large delegations, like for example the United States and so on and so forth. So these industry delegates go there and lobby with governments and with the UNFCCC to get favorable deals. So obviously, the people of the world will have to see through this whole game and take steps in order to see that their interests are protected. You mean to say because you are part of United Nations now, the failure of United Nations is going to be very clearly evident because of these WEF sustained goals, the way they are trying to dictate terms to the world. United Nations has become just a platform to be utilized. Well, everybody utilizes platforms, and so I'm not saying United Nations is in favor of this, that, or the other. But if you look at the whole process, what really has happened is that UNFCCC has been hijacked. Yeah. So it's been hijacked by two forces. On the one hand, definitely the corporations have succeeded in influencing the whole process out there. The second thing is that the corporates also influence their own governments, and their governments then go there and place an agenda in such a manner that they may say very nice things out there, but in practice what really happens is that it really favors the corporates, So, not the people. in such scenario, Sapacc-like organizations across the globe, don't you think that if you are united, because you are trying to connect the people, trying to take down the policies to the people, the climate crisis or environmental disasters or chemicalization or hybridization of agriculture, the ill effects of them and the ill effects of GMO foodstuffs, so and so forth. Sapacc-like organizations, do you think will serve an alternative? And what is that people can expect out of these 3 days Sapacc conference? Will it be in that direction? Absolutely. Like I said, Sapacc's role is to really mobilize people to play a very active role in the process of trying to tackle the climate crisis. That is what Sapacc is. And this is not just Sapacc alone. There are many organizations or rainbow coalitions that are doing this in different parts of the world. Sapacc is just one more such coalition, except that we are a pan-South Asian coalition. That is what. So there is a ray of hope for the people. I am not sure, because this depends on how. There is very little time. We have only 8 years left to halve our emissions, and I'm not sure that we are going to necessarily succeed, but there is no other way out except to try and tell people what the truth is and get people to act. Now, whether people will actually get mobilized and whether they will be able to do things in time is not for me to say, but time will tell us. So I'm not going to claim success, I'm not going to claim failure, I'm only going to claim that this is the path I need to take, that people have to be involved in solving this problem.
when the present is not safe, what is that we are going to give to our kith and kin in future? Don't you think that this is a big existential crisis which is happening, not just in the entire world? Absolutely, there is an existential crisis, but I can't guarantee success. If people don't wake up in time and they are lulled into false solutions, I really would say that it is partly maybe our failure and partly it's also because the system as it exists is able to succeed in taking the world to damnation. So one message, if you want to give to world elites who are trying to control the economy, even they are not safe, in your own words. The world will collapse. I mean, the entire human society is on the verge of collapse. There is absolutely no doubt about it. They cannot go and have life in bunkers. No, you can't. You can't dig a bunker which is 6 floors under and you can potentially no. The toxicity of the whole situation will creep not just 6 floors down, it will creep 60 floors down. There is no place you can hide. Yeah, this is from Calicut, where we are trying to stream it live on Drtspr channels. The world elites who are trying to control the economy, now it's a subtle warning to you, go deep or up, wherever you are. This pollution, this crisis will affect everyone. So at least wake up so that the governments will not become selfish and impose, which is going to endanger the Mother Earth planet. Thank you. We'll have a break. Thank you.